Again, I like to welcome you children in today's class. Yesterday we studied about meter scale and vernier scale. After that we left, and in continuation we will study that if we want to measure even less than 10 to the power minus 4 meter, then we know that vernier calipers could not be used in that case. Then what can we use? So the name of that device is screw gauge. Screw gauge, right? This is the device, and yes, again let me check if there is any picture available which can with the help of which I can show you that how screw gauge looks like. Okay, so this is the picture of screw gauge. Like I told you that in vernier calipers you had two scales, in the same way in screw gauge also you have two scales. One is circular scale, and one is linear scale. These two type of scales you have here. Now the thing is, what is the minimum limit again in the case of screw gauge that could be measured? So that limit is 0.001 centimeter, and you can also call it its least count, right? Like we have seen yesterday. So if you will convert it into meter, then it would be something like this: 10 to the power minus 2 meter. And after that, wait a minute, and after that if you will adjust this decimal, then you will get 10 to the power minus 5 meter. Okay, so here we got our answer that with the help of vernier scale we were having a limit of measuring not less than 10 to the power minus 4 meter, but even smaller measurements can be done with the help of screw gauge. As we can see, it could measure up to 10 to the power minus 5 meter, right? Now if you want to measure length which is even less than these, then there are so many methods which are available and comes under the section of indirect methods, right? And those all indirect methods we are not going to study here, so you can thank God for that. Okay, after this we will study a new topic, which is measurement of large distances. और लार्ज भी कितना बच्चों? लार्ज भी इतना कि जैसे दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, प्लैनेट और मून के बीच का डिस्टेंस, है ना, इस तरीके से लार्ज। इतना लार्ज नहीं कि जैसे आपका स्कूल और आपका घर, ठीक है, समझ रहे होंगे ना आप लोग। तो लेट अस सी व्हाट इज़ दैट मेथड which could be used to measure large distances. So the name of that method is that method is parallax method. So how one can define parallax method? We will see this, like in what way we can define parallax method. Parallax method is a method which is used to measure large distances between planets or heavenly bodies by measuring बच्चों इसकी जो है ना कोई एकदम एग्जैक्ट तो डेफिनेशन है नहीं,
लेकिन इसका यूज़ क्या है कि उसी के बेसिस पर हम इसे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। बाय मेजरिंग एक एंगल होता है बच्चों, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। बाय मेजरिंग पैरेलैक्स एंगल एंड बेसिस, पैरेलैक्स एंगल एंड बेसिस। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम। सो व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड? Parallax method is a method which is used to measure large distances like distance between planets, or you can say any heavenly body. And how can we do that? By measuring parallax angle and basis. You know children, this parallax angle we also call it parallactic. We also call it parallactic angle. इसे हम parallactic angle भी कहते हैं। अब ये दो चीज़ें नहीं आई यहाँ पर, एक तो पैरालैक्टिक एंगल और एक बेसिस, है ना। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, यही हमको क्या करना है, अब इसमें पढ़ना है। ओके, सो टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स वी हैव टू प्ले अ गेम। ओके, एक गेम खेलना पड़ेगा, आप यही कह सकते हो, ठीक। और वो गेम क्या होगा, उस गेम में एक बंदा है और इस बंदे ने क्या कर रखा है, एक पेंसिल ले रखी है, ठीक। ये इसके पास एक पेंसिल है, कौन सी कंपनी की ये हमको नहीं पता हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ये एक इसने पेंसिल ले रखी है। ओके, नाउ व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ हिम, देयर इज अ वॉल। एक सामने क्या है, दीवार है, ये दीवार बना दी मैंने जैसे तैसे, ठीक। अब क्या करता है ये जो बंदा है, ठीक है, ये इसको आप अपने आप को समझ सकते हो। आप जो हैं क्या कर रहे हैं, इस पेंसिल को ऑब्जर्व कर रहे हैं देयर ऑन द वॉल, ठीक है। बट नॉट सिंपली, व्हाट यू हैव टू डू, you have to put hand on your one eye and you will see this pencil with one eye open only. अब मान लीजिए आप अपनी लेफ्ट आई से देखते हैं, ठीक है। जब आप लेफ्ट आई से देख रहे हैं तो जो पेंसिल होगी आपको, ये आपको वॉल पर सपोज करिए कहीं यहाँ पर दिखी, एंड आई मार्क्ड दिस पॉइंट एज ए, राइट। देन व्हाट यू डिड, you started watching this pencil without moving from its position with the help of right eye. अब की बार हम राइट आई से देख रहे हैं और लेफ्ट आई को हम क्लोज कर लेंगे। देन पोजीशन पेंसिल की बिना चेंज किए ही what will you observe? You will observe that the marking of this pencil on the wall, after watching with right eye, you will see that the position of pencil reaches here at this point B. मैंने उस पॉइंट को B कह दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? When you were watching from the left eye, position was A. When you were watching from with the right eye, position is B. तो ये जो इनके बीच में गैप आ गया, ठीक है, पोजीशन पेंसिल की चेंज नहीं की और फिर भी क्या हुआ, वॉल पर ये गैप आ गया, पेन की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। तो ये जो गैप आ जाता है, पोजीशन चेंज हो जाती है। व्हेन यू आर लुकिंग विद डिफरेंट आईज, पेंसिल लुक्स एट डिफरेंट पोजीशन ऑन द वॉल, राइट। सो दिस चेंज इन पोजीशन ओनली इज नोन एज पैरेलैक्स। भाई इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं। तो देखिए खेल खेल में हमने पैरेलैक्स समझ लिया। अब एक और बड़ी बात यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ऑन द वॉल, 2 points मीन्स ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 points ऑन द वॉल, दिस विल बी कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, दिस डिस्टेंस ओनली इज नोन एज बेसिस। ओके, इसी को हम बेसिस कहते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड that what is parallactic angle, और इसका दूसरा नाम parallax angle, ठीक है। अब इसको और समझ लीजिए बच्चों, parallax angle क्या है, ये मतलब parallax method क्या है। ये ऐसा है कि अगर सिलेबस में है ना तो आप लोग ये समझो कि एग्ज़ाम में आ गया,
इतना इम्पोर्टेंस रखता है ये। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरालैक्टिक एंगल। हाँ बच्चों, एक मिनट, ये पैरालैक्टिक एंगल समझने से पहले ना एक करेक्शन करेंगे। देखो हम यहाँ पर करेक्शन क्या है, बहुत ही छोटा सा है। व्हाट आई टोल्ड यू दैट basis is the distance between the two points we obtained on the wall, मैंने ये कहा, बट ये थोड़ा सा ये गलत है। बेसिस क्या है तो डिस्टेंस ही, बेसिस क्या है तो डिस्टेंस ही, लेकिन दिस इज द डिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ये स्पेलिंग पूरी कर लेना आप लोग, ठीक है। ये हुआ करता है बेसिस। अब देखिए ये मैंने क्या लिख दिया, है तो डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का ही है। अब कौन से पॉइंट है वो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जहाँ से कर रहे थे भाई, वी ऑब्जर्व्ड द पोजीशन ऑफ पेंसिल फ्रॉम आवर आईज, ठीक है। अब एक आई अगर ये है, दूसरी आई अगर ये है, देन these are the points of observation and the distance between these two points, that means the distance between these two eyes, इसी को हम क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे, ये बेसिस कहलाएगा, ठीक है। जो मैंने पहले वॉल पर बता दिए थे ना ये दो पॉइंट, ये बेसिस नहीं है, तो ये करेक्शन हमने करना था यहाँ पर, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू पैरालैक्टिक एंगल, ठीक। अब चलते हैं पैरालैक्टिक एंगल को समझते हैं। सो as I said you that basis is the distance between the points of observation, ठीक है। तो क्या होगा, when you are watching with the help of left eye, सपोज करिए ये आपकी लेफ्ट आई है, ठीक है। जब आप लेफ्ट आई से देख रहे थे, सपोज करिए आप इस बॉडी को देख रहे थे, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को आप देख रहे थे, एंड अब क्या हुआ था कि ये जो बॉडी है ना, ये देखिए आपके जो देखने की डायरेक्शन होगी ना वो कुछ ये होगी, ठीक है। मतलब इस पाथ के थ्रू आप इसको देख पा रहे थे। अब एक दो आई हैं आपके पास, व्हेन यू आर वॉचिंग विद द हेल्प ऑफ राइट आई, जब आप राइट आई से इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, तब आपके जो विजन का लाइन ऑफ साइट था, इट विल बी दिस पाथ। इफ आई विल गिव नेम टू दिस, then you can say LO is the line of sight for right eye, RO is the line of sight for right eye, and the distance between the two points of observation, that means left and right eye, this distance will be called, इसे हम क्या कहते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, basis। अब आप ऑब्जर्व करिए द बॉडी विच वी आर लुकिंग, ओके, वो क्या हो रहा है, जिस बॉडी को हम देख रहे हैं, बेसिस के अगेंस्ट मीन्स अपोजिट साइड में उस बॉडी पर एक एंगल बन रहा है, द एंगल विच इज मेड बाय द टू लाइन ऑफ साइड्स, राइट। दिस एंगल ओनली इज नोन एज पैरालैक्टिक एंगल। इसी एंगल को हम पैरालैक्टिक एंगल कहते हैं। या तो आप पैरालैक्टिक एंगल कह लीजिए, अदरवाइज यू से पैरालैक्स एंगल, ठीक है। तो यही था वो एंगल जिसके बारे में हमको पढ़ना था, ठीक। पैरालैक्टिक एंगल भी आ गया, बेसिस भी आ गया। अब देखिए पैरालैक्स मेथड में हम इन दोनों चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो दीज टू थिंग्स, बेसिस एंड पैरालैक्टिक एंगल, we will apply in the same way, but the situation will be bit different. Suppose there are two places on the earth, one place is A and other place is B, and from these two places you are observing a planet which is very far from earth. Okay, this is again a planet which is very far from the earth. How far it is, the same we are going to measure. Let us see how. Now from point A, when you observed, you got this line of sight. Let this point be O. From point B, when you observed, oh my god, the line changed its path. Let us draw again. So when we observed from B,
it made a line like this, line of sight. Here the two line of sight made an angle. This angle is known as parallactic angle, and here between the 2 points of observation there will be a distance, it is called basis. Suppose basis is represented by B and parallax angle by theta. These distances AO and BO will be approximately equal to each other, and I will call this distance equal to D. Now question arises, why these two distances be equal? Because children, remember here this D distance is very large as compared to this small distance which is known as basis. Okay? Then here we can apply one formula which is known in this way: angle is equals to arc upon radius. Angle is equals to arc upon radius. Now angle is theta, arc will be in front of angle, that means it is equals to B. And radius, here this D distance will work like radius, so here we will write capital D. From this formula, using this formula, you can find out the value of D, and you can say we will find out the value of distance, the distance between any two planets, you can say. So this was your parallax method. I hope you understood in a better way, right? मैंने धीरे धीरे समझाया जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि भाई इम्पोर्टेंस इसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा है. ठीक है, एक करेक्शन मैंने यहाँ पर करवाया था बेसिस का, वो समझ जाइएगा आप लोग. वीडियो आप अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लीजिए, वैसे मैंने धीरे धीरे पढ़ाया बहुत ज़्यादा, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा. आफ्टर दिस आई जस्ट कैन से कि आप लोग रिवाइज करिए बहुत अच्छे से, और कहीं भी अगर सिलेबस में कवर होता है तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एंड क्वेश्चन लाइक इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल or you can say in the form of theory must come, it must come in your exam. Remember, this is parallax method, very important. Okay, so with these words I want to take leave. We will see you in the next class. Okay, so take care and keep revising.